Good evening, Ghost. Welcome in my life. Thank you for joining. Om Name Narayan Devansh. डोंट नो गोस्ट, मुझे नहीं पता. काफ़ी टाइम बाद लाइव कर रही हूँ, शायद मैं भी. Hello, sir. Hello, everyone. We have 31 viewers. 34 now. कैसे हैं आप सब? पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. Looks like CBS has been got. ये क्या ट्रांसलेट करके दे रहा है क्या अभी भी? तो इंग्लिश लिख रहा है गोस्ट, मतलब ट्रांसलेट करके दे रहा है. A 7-year-old patient sustains a deep partial thickness burn to his heel. Okay. When teaching the patient a stretching program, the greatest emphasis should be placed in the direction of plantar flexion, dorsiflexion, inversion and with plantar flexion, eversion. अगर हील में बर्न है तो स्ट्रेचिंग करते टाइम ध्यान देना चाहिए. जब हम पैर को डॉर्सी फ्लेक्स करेंगे आई थिंक तब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है. तो लेट्स सी बी इज़ द आंसर और नॉट. 31B. ठीक है. What are you preparing now? I'm preparing for a government competitive exam for the post of physiotherapist. This education is not being live because people are not living. हम क्या ही बोल रहे हैं, आधी चीज़ समझ आ रही है मुझे उस ट्रांसलेट होने की वजह से. मैं तो अपने लिए पढ़ रही हूँ ना. Physical activity has been hypothesized to decrease the occurrence and severity of coronary artery disease. Okay. Which of the following doesn't occur as a result of regular training program? An increase in coronary collateral vascularization. डजेंट पूछ रहा है, मतलब क्या नहीं होगा. एक्सरसाइज करवाएंगे तो हम रेगुलर ट्रेनिंग करवाएंगे तो क्या नहीं होगा इसमें से. मैंने ट्रांसलेटर बंद किया हुआ है गोस्त, यार पता नहीं अपने आप ट्रांसलेट कर रहा है फिर भी. An increase in coronary collateral vascularization.
एन इंक्रीज इन सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं, एक्सरसाइज करने के बाद सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल कैसे बढ़ सकता है? एन इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स मास एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज मायोकार्डियल एफिशिएंसी, बी इज़ द आंसर। 31, ठीक है 31 का बी ही है आंसर। 32, a therapist conduct a worksite examination for a patient rehabilitating from a spinal cord injury. Okay. During the examination, the therapist determined that the patient's desk height is inadequate for wheelchair. Okay, तो desk की height ठीक नहीं है wheelchair के according. The most cost efficient and acceptable accommodation would be to, अब हमें height बढ़ानी है तो क्या करेंगे? कॉस्ट एफिशिएंसी रखनी है, एकोमोडेशन होनी चाहिए, पैसे भी नहीं लगाने हैं और हाइट भी बढ़ानी है व्हील चेयर की। ओके, तो क्या कर सकते हैं? सिक्योर अ व्हील चेयर विद अ स्मॉलर फ्रेम। नो, व्हील चेयर के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, डेस्क के साथ ही कुछ करना है। प्लेस ब्रिक्स अंडर द डेस्क टू इंक्रीज डेस्क हाइट, सही है, ईंटें लगा के बढ़ा सकते हैं हाइट। परचेज अ न्यू डेस्क, नहीं, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। एलिमिनेट जॉब ड्यूटी, अच्छा जो भी छोड़ दो, नहीं, बी ठीक है। प्लेस ब्रिक्स, ईंटें रख देंगे तो बढ़ जाएगी हाइट। 32 बी, ठीक है 32 बी। A therapist observed that a patient has an aggregated heel strike on the left during ambulation activity, ठीक है, हील स्ट्राइक ज़्यादा कर रहा है एम्बुलेशन में लेफ्ट साइड पे। विच टर्म इज़ मोस्ट एफिशिएंट विद हील स्ट्राइक यूजिंग RLA नॉमेनक्लेचर? हील स्ट्राइक को इनिशियल कॉन्टैक्ट, सी, इनिशियल कॉन्टैक्ट को बोलते हैं हील स्ट्राइक, ठीक है। 33 सी, अ पेशेंट विद सेरिबेलर डिसफंक्शन exhibits sign of dysmetria. He is making noise. Is he feeling irritable? किसको पूछ रहे हो? क्या किसकी आवाज़ आ रही है यार? एक तो ट्रांसलेटर से पता नहीं क्या ही मैसेजेस आ रहे हैं। A patient with cerebellar dysfunction exhibits sign of dysmetria. Which of the following activity would be the most difficult for the patient? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? Alternate finger to nose, placing feet on floor marker while walking, walking at very speed, marching in place. Dysmetria है पेशेंट को। ऑप्शन क्या था? मोस्ट डिफ़िकल्ट क्या होगा? I think walking at varying speeds or marching in a place. Let's see क्या है आंसर इसका। 34A, finger to nose, alternate finger to nose. A therapist complete a gait analysis on a patient diagnosed with Parkinson disease, ठीक है। As a part of the examination, the therapist measured the distance between right heel strike and the next consecutive heel strike. The measurement is used to measure right heel strike और next left heel strike. That means एक स्टेप की बात हो रही है। स्ट्राइड में तो राइट हील स्ट्राइक से राइट हील स्ट्राइक तक का ही होता है, लेफ्ट हील स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। तो दिस इज स्टेप लेंथ मेजर कर रहा है लेफ्ट और राइट। राइट 35 का डी, बी, ये कैसे हो सकते हैं? स्ट्राइड लेंथ कैसे हो?
भी चेक करते हैं उसको. A therapist examine a patient referred to physical therapy with sacroiliac pain. As a part of the examination, the therapist assessed the position of sacrum by palpating the inferior lateral angles, which spinal level is most consistent with the inferior lateral angles. Sacroiliac pain है. A36 B. A therapist ordered a wheelchair with a reclining back for a patient in rehabilitation hospital. Which type of leg rest would be the most appropriate for the wheelchair? A physical therapist transfer a patient in a wheelchair down a curb with a forward approach. Which of the following is an appropriate action for this task? Have the patient lean forward, have the wheelchair brakes locked, tilt the wheelchair backward, position yourself in front for the patient. 38D. A physical therapist transfer a patient in a wheelchair down a curb. Okay. Position a patient in a supine in order to perform a passive stretch to the rectus femoris on the right. In order to effectively stabilize the pelvis in a supine position, the therapist should passively flex the right hip to the patient's chest. अगर हम रेक्टस फेमोरिस को स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमें पेशेंट को प्रॉन लाइन में लेटाना पड़ेगा. तो उस टाइम पे हम पेल्विस को सुपाइन पोजीशन में 39B. Failure to integrate the dash reflex could explain a child's inability to flex the neck while in a supine position. A ramp which begins at ground level and ends 18 inches above ground should be at least dash feet long. C41 9.
The tuberosity of the fifth metatarsal may be aroused during violent eversion of the foot by the tension of the dash muscle. ई वर्टल की बात हो रही है तो tibialis posterior या फिर peroneus longus 42 का C peroneus longus. A 47-year-old with a diagnosis of severe with left hemiplegia is referred for orthotic examination. Significant result of manual muscle testing: hip flexion 3 plus, hip extension 3, knee flexion 3 plus, ankle dorsiflexion 2, ankle inversion and eversion. Sensation is intact and no normal turn is noted. Most appropriate orthosis for this patient is ankle foot orthosis with a locked knee. एंकल में स्ट्रेंथ कम है, डोर्सिफ्लेक्सर्स में 2 है और इनवर्टर और ईवर्टर्स में 1 है. ओके I think 43 is the metal upright ankle foot orthosis locked in neutral. ठीक है 43C. Let's go to 44. A physical therapist examines a 15-year-old female distance runner for foot pain of unknown etiology. Okay, as the therapist palpates along the medial aspect of the foot and ankle, she palpates the head of first metatarsal bone and the metatarsophalangeal joint. Immediately proximal to this, she identified the first cuneiform. What large bony prominence would you expect the therapist to identify next if she continued to move in a proximal direction? नेविकुलर होना चाहिए. अगर प्रॉक्सिमल डायरेक्शन में जा रही है, सबसे पहले उसको फर्स्ट मेटाटार्सल मिला है, मेटाटार्सल के बाद मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, फिर उसको फर्स्ट क्यूनिफॉर्म मिला है. तो आई थिंक नेविकुलर. B44 आंसर क्या है? बी. ठीक है. A patient with a traumatic brain injury and right hemiplegia receives an ankle or foot orthosis to assist with ambulation. ठीक है, ब्रेन इंजरी है, हेमिप्लीजिया है राइट साइड पे, एंकल फुट ऑर्थोसिस दे दिया चलने के लिए. The patient's knee occasionally buckles during stance phase. A modification to the ankle foot orthosis that would enhance knee extension को जो enhance करे during loading and stance on the right is to, तो हमें डोर्सिफ्लेक्स करेंगे तभी तो नी पे एक्सटेंशन होगा ना. पोजिशन द एंकल जॉइंट इन 5 डिग्री ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन. आई थिंक फर्स्ट 45 का ए, 45 का बी है. शॉर्टन द toe plate. A therapist treat a patient diagnosed with Parkinson disease when working on controlled mobility. Which of the following would best describe the therapist objective? Facilitate posture muscle control, promote weight shifting and rotational drum control, and emphasize reciprocal extremity movement,
फैसिलिटेट टर्न एंड रिजिडिटी, कंट्रोल्ड मोबिलिटी के लिए काम करना है उसको, तो उसको वेट शिफ्टिंग एंड ट्रंक रोटेशंस कंट्रोल होना चाहिए। 46 का सी रेसिप्रोकल एक्सट्रीमिटी मूवमेंट। A therapist examine a patient for a standard wheelchair. They will measure the patient posterior buttock along the lateral thigh to the popliteal fold. The therapist then subtract 2 inches from the measurement. This method can be used to measure seat height, seat depth, seat width, आर्म रेस्ट लेंथ। अगर बटक्स का एरिया मेज़र कर रहा है उसमें से -2 कर रहा है तो आई थिंक सीट का विड्थ होना चाहिए डेप्थ भी हो सकती है इसकी B47 B47 भी ठीक है। सीट की विड्थ डेप्थ के लिए मेज़र कर रहे हैं। A therapist select an assistive device for a patient rehabilitating from an ankle injury. Which of the following would serve as the most significant obstacle to independent ambulation with auxiliary crutch? पेशेंट को एंकल इंजरी हुई थी और उसके लिए उसने एक्सिलरी क्रच ले लिया। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है इसमें? कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, वेट बेयरिंग रिस्ट्रिक्शन, आर्किटेक्चरल बैरियर, यूनिलेटरल ओवर एक्सट्रीमिटी वीकनेस। उसको पैर में दिक्कत थी, उसको क्रच लेने की क्या ज़रूरत थी दोनों में, एंकल इंजरी में। चल आई थिंक 48 का डी। लेट्स चेक। 48 का बी है। वेट बेयरिंग रिस्ट्रिक्शंस। A developmental examination is performed on an infant. The infant is हाँ जी मैं लेके आई थी। गोरी का है ये। हेलो, गोस्ट ही है क्या यहाँ पे, कोई और है? हेलो अजय सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ काफ़ी लेट हो गया ना, आप इस टाइम नहीं आते हो लाइव।
यहीं होते हैं सर, वो आ जाएंगे फिर 1-2 मिनट में। ओके। कुछ नहीं, वो बस मजाक बनाते रहते हैं बच्चे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। What? No, it's not like that. It's ridiculous. Disgusting. हाँ, सब ठीक है सर। Good night, take care.